वो कहते हैं ना, लाइफ में अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगे तो लाइफ थोड़ी बोरिंग बन जाती है. देयर शुड ऑलवेज बी द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. In this video, I'm gonna take you to the virtual travel experience to East Sikkim Changu Lake. और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफ़ी चिल वाली वाइब्स आएगी. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चेक आउट द टीजर. Today I'm very much excited because we are traveling to East Sikkim Changu Lake. और मैं तो बोल रहा हूँ हेडफोन लगा लो क्योंकि आगे की सफ़र होगी कुछ चिल वाली वाइब्स के साथ. You want to say anything? We've been traveling all across India. Yes. And Sikkim has its own beauty. Yes. We've been to the North Sikkim, we've been to the East Sikkim. It's just out of the world. And I would request and suggest everybody to travel and enjoy the entire country, and Sikkim is just amazing. So I am finally at the location at Jaluk है. So at an earlier time यो जग्गाको बारेमा मैले एकदमै सुनेको मात्रै थिएँ, फोटोजहरू मात्रै देखेको थिएँ. So it was my first time and the first experience was just priceless, and this beautiful feeling, this location are just mesmerizing. So at this location when I reach here हैन, सबैजनाको फोटो खिच्दा मिस्टर निसेस इज मिस्टर निसेस हैन. अन्त अहिले चाहिँ टक्कै यहाँनिर आफू न्यू भ्लगमा चाहिँ आफै एकदम मस्की बोल्दैछु हैन, ब्लसिङ हो. अन्त इट वाज जस्ट ब्युटिफुल फिलिङ. वर्ड कान्ट इभन डिस्क्राइब दिस ब्युटिफुल फिलिङ्स. एन्ड इट वाज यति साह्रो जाडो छ कि यहाँनिर, तर घाम चाहिँ लागिरहेछ बट स्टिल यति साह्रो जाडो छ कि फोन होल्ड गर्नु पनि सकेको छुइनँ, त्यति साह्रो जाडो छ यहाँनिर हो. यसैले मफलर लाउँदा त समटाइम्स आई फिल लाइक मे हुनाको शाहरुख खान भन्ने त भएन होइन, तर मेरो लागि म अन्त आई डोन्ट नो होइन. और इसी चिल वाली वाइब्स को बनाए रखने के लिए मैं रुका एक सेल्फी के लिए. सो आई एम गोना आस्क सम टुरिस्ट ओभर हियर. सो व्हाट वाज हर एक्चुअल फिलिङ्स. सो उहाँले चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? सर, सो हाउ वाज योर फिलिङ्स ओभर हियर? व्हाट वाज योर एक्सपिरियन्स? Just beautiful. Sir, you want to say anything? We've been traveling all across India. Yes. And Sikkim has its own beauty. Yes. We've been to the North Sikkim, we've been to the East Sikkim. It's just out of the world. And I would request and suggest everybody to travel and enjoy the entire country, and Sikkim is just amazing. Sir, do you have a YouTube channel? No, we don't have a YouTube channel, but we do take a lot of videos and pictures. Yes. My Instagram handle is abhishek.tuppil, abishek.thuppil, and It's beyond boundaries. BYOND. Yes. BOUNDARIEZ. Yes. So, do you want to say something about Northeast India? Beautiful, yeah. Just too beautiful. Sir? I'll tell you, this is the crown of India. Heaven on earth. Heaven on earth, and this is the crown on top of India. It's a real nice place, and I would suggest everybody to travel. Thank you, sir, for being here. The person that you saw just now, they are coming from this bike from Bangalore, and you can check out the gears and the bike over here. And this is the bike they all are came from, and this is the triple. And even they are sharing their Instagram handle also, so you can check it out. I will leave that on my description section, so you can check it out. So this is the beautiful feelings, and the people over here are just amazing. So we are at this beautiful location at Jaluk, and sir, did you want to say something? Jaluk is absolutely fascinating place. Everyone should visit, and it's not like that you come only with your friends. It's a very good viewpoint over here. You come with your family, right? So especially those people are suffering with anxiety, depressions, and
also the frustration those who are having, and even the heartbroken peoples, right? So because this place is very chilling place, I feel like that, and I hopefully everyone can enjoy over here and have a very good view of this place. It's a very beautiful. Please visit this place and stay tuned. Thank you. So we are at the middle of destination, so we will meet over there at Canggu Lake. So till down we will getting over to the Canggu Lake, so enjoy the destination. So let's see some glimpse over here of the destination. Miss Maria अघि त गाडीमा के भन्छु भन्दै थियो, लु भन्ने बेला भयो, अहिले आएर के भयो, कस्तो भइरहेछ? ठण्डी, एकदम चिसो छ हो, एकदम ठण्डी। अब हिँडी पनि यस्तो सुनिहाल्नु भयो, लोकेसनमा आएर त पुरा ठण्डी भन्ने आइपुग्यो, ठण्डी भन्ने भइसकेछ त, एकदम जाडो छ। हंटिंग द परफेक्ट स्पॉट और एक कप चाय, इसी के साथ में निकला आगे की सफर। So right now I am at the locations at Baba Mandir, Harbhajan Baba Mandir. So here is the glimpse of this location. As you can see all the locations over here, and so this is the glimpse of these beautiful locations, as you can see. First time देखेको yak, and it was just so cute. Top of the mountain, first time yak देखेको, and it was just like heaven on the earth. Wow. दोस्तों, ये बातें 1966 जब एक जवान पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती होता है, पर 4 अक्टूबर 1968 को कुछ सामान ले जाते वक्त उस सिपाही का पैर फिसल जाता है। नीचे घाटी में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। घाटी में तेज पानी की बहाव से उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है, और कुछ टाइम बाद वो अपने साथी के सपनों में आता है और उन्हें अपनी बॉडी के बारे में बताता है, और उनकी बॉडी को खोजा जाने पर उनकी बॉडी उसी जगह से मिलती है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, और कहा जाता है कि शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा कर रही है। सलाम है हमारे देश के सिपाहियों के जज्बातों को। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो तो इंडियन आर्मी के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और ये वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ प्यार भरी बातें और कुछ अनसुनी दास्तां के साथ चल रहा है। सो आगे हम जाएंगे उन पहाड़ियों की तरफ, कुछ अनसुनी और कुछ अनदेखी दास्तां को तलाशने के लिए। So guys, I am finally at the destination, Canggu zone. र भर्खरै मात्रै म छाङ्गु आइपुगेँ हैन। सोचेको भन्दा चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली कोल्ड रहेछ, तर जति कोल्ड छ त्यतिकै टेरिफिक मजा लागिरहेछ मलाई। आई एम एक्सट्रिमली ह्याप्पी। आई डोन्ट नो मैले कतिखेप एक्सट्रिमली भनिसकेँ भनेर हैन। माइट बी दोज हु आर वाचिङ हैन, you can feel. I will show you all the beautiful glimpse over here. So within couple of seconds I will be there at the destination, proper destination. त्यो destination मा गइकिन चाहिँ तपाईहरुलाई proper shoot दिनेछु। So check out.
So I'm gonna ask some questions over to the guest of Sikkim. So sir, where are you from? I am from Assam. You are from Assam. So we are both from Northeast. I'm from Sikkim as well. Okay. So ma'am, you are also from Assam. Yes, I'm his wife. So I'm making a YouTube video and my YouTube channel name is Lensburg. So what was the specialty over there in Assam? Tea gardens. Tea gardens. And one horn rhino. One on rhino of Kaziranga. So And Tawang, Assam, Tawang from Arunachal is very beautiful, like Sikkim. so what was the beautiful feelings over here? What you want to say to Sikkim audience? It's a very beautiful place. We had a lot of fun, and please maintain the natural beauty of the place. We liked it a lot. So basically I am making a YouTube video. So did you want to say something about Sikkim, sir? Sikkim is beautiful and it's a must visit for everyone. Yes. So where are you from? I'm from Indore, MP. What was the place to visit in Indore? Lot of places, but it's basically known for good food. Okay, thank you, sir. Thank you so much. So good to know you. So it was good to interact with lots of beautiful tourists over from different states. So it was kind of different experience that I have gained today, because usually I was uploaded all cinematic videos only. So this was my kind of first vlog ever in these beautiful locations. So this was my first travel vlog. So it was just a mesmerizing feelings over here. I want to ask you something to the people outside from Sikkim. So sir, where are you from? I'm from Jamshedpur. Jamshedpur. What was the specialty of Jamshedpur, sir? Jamshedpur is famous for Tata Steel. Okay. For Tata, basically for Tata group of companies. A lot of companies over there. Okay. So, ma'am, did you want to say something about Sikkim? Yeah, it's a beautiful place, amazing place. Did you? Lake is so amazing. So, did you want to say something about Sikkim audience? Sikkim audience, I think you guys have preserved all these lakes and these tourist spots very well. So kudos to People you. are like really good. And people are very nice. Okay, sir. The people of Sikkim are really amazing. Every time I get time to talk to them or spend some time, I love speaking to them. They are so honest and good at their heart. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So I'm gonna ask something to the local people of Changu Lake. So, दाजु, यो जग्गाको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ छङ्गु लेक हो। हजुर। यहाँ याक राइडिङ हुन्छ। हजुर हजुर। टुरिस्टलाई चढाएर घुमाइदिन्छ हामी। हजुर हजुर। तपाईको नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ अब कर्मा। कर्मा? तपाईको घर यतै हो? यतै हो। यतै हो। यो जग्गामा चाहिँ कुन चाहिँ टाइम चाहिँ पर्फेक्ट टाइम हो, जुन चाहिँ आउनेको लागि चाहिँ कुन चाहिँ टाइम चाहिँ सही हो भन्नुहुन्छ? मतलब कुन चाहिँ महिनामा चाहिँ हामी आउनु सक्छ? त्यो जग्गामा चाहिँ अब भनौँ भने 12 महिना त्यस्तै हुँदै हुन्छ हो। हजुर। अब अक्टोबरतिर आयो भने पानीकै सिजनै हुन्छ। हजुर। अब यहाँ आयो भने यतिखेर आयो नि चिसो। हजुर। नोभेम्बरमा अलिकति राम्रो हुन्छ अथवा अलिअलि। ओके, सो गाइज एज यु हेयर द्याट होइन, कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ आयो भने पर्फेक्ट छ। बट बेसिकली दाले चाहिँ भन्नुभयो कि 12 महिना आयो भने पनि इट वाज गुड, किनभने जग्गा नै त्यस्तो छ होइन। तर पनि एक्ज्याक्ट मन्थ चाहिँ कुन चाहिँ महिनामा आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन। सो आइएम इन्टरेक्टिङ, आइएम लाइक बन्जारा खालके फिलिङ्स आइरहेछ के हो, किनभने म प्रपर मान्छेहरूसँग भेटेर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डिफ्रेन्ट जग्गाको मान्छेहरूसँग बोलिरहेको छु होइन। सो इट वाज काइन्ड अफ मेरो कन्फिडेन्स लेभल पनि बढिरहेको छ हो। फ्याक्ट इज द्याट, एन्ड स्टिल आई एम फिलिङ सो गुड टु इन्टरेक्ट विथ लट अफ people outside from Sikkim as well and inside of Sikkim too. It was just a beautiful day. So it's the end of this vlog होइन। सो जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ, डु सब्सक्राइब, सेयर्स होइन। सो वाट एभर यु फिल्स डु कमेन्ट होइन। तपाईँलाई लाइफमा कस्तो लाइफको एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन। सो आज म यहाँ पुगिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने डेफिनेटली आई विल बी एट सम popular destination over India, outside from India also. So do support me. Lensburg Awaken to the different world. Get down with that channel by signing off. बहुत से लोग
आपकी ज़िंदगी में यूं ही मिल जाती है, पर कहीं ना कहीं वो लोग आपके ऊपर एक गहरा असर छोड़ जाता है। एक दिन तुम अपने आप से कुछ इस तरह से मिलोगे कि तुम्हें ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगा। और एक बात तो है दोस्तों, असली मज़ा ना मंजिल का नहीं रास्तों का होता है। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।